Hello, ma'am. Hi, Veem Tales. नहीं नहीं, it's only Veem. Okay, Veem. Hi, hello, and hello to everyone who all have joined us. Yeah, it's really going to be an amazing session. I'm so excited. Okay. The first thing, ma'am, that I want to ask you is Yeah. that due to the pandemic, how is your profession or how is your service going on? Any changes happen? I must say that pandemic, the first wave and the second wave, both Hmm. have been very hard, and Hmm. especially the second wave. Okay. Because in the first wave, somehow only the 20 or 25% of the staff was getting like COVID positive, and there were cases among the staff. But this Hmm. time in the second wave, even the like most of the staff was getting infected and most of the offices were getting closed. So it is a Oh. very difficult situation if your own employees are getting infected, then how you run the system. And Hmm. even in those times, whatever staff was available with that, um, we ensured throughout the country that post offices remain open because it's an essential service, and all the like doorstep banking services are provided. The essential medicines they get delivered to the people all around the country. So it has been very tough on the staff, on the management, on the administration. But I think, as we say, together we can. So together the department did it. Yeah. हम बहुत सारे लोग आपको नमस्ते बोल रहे हैं कि your fans already joined. नमस्ते है सभी को, हेलो है सभी को, सत श्री अकाल है सभी को. आधे लोग ना हमको पंजाबी मानते हैं ना. Yes, I know that. Because of my Instagram page, people think I belong to Punjab. या या सो मैम ट्रेनिंग में तो आप लोगों को सब कुछ सिखाया जाता है या प्रॉपर एकदम सब कुछ किया जाता है बट आई वांट टू आस्क अबाउट दैट डे the day you got your first charge, huh? Like first independent charge, you took a decision, you signed that page or something like that. How was that day? How was that feeling? Well, I must say that during my training days, Uh, I tried my best to learn all the rules, regulations, and uh, everything. But I think until and unless you are in the like real life situation, you uh, basically don't learn. So uh, I got so my first posting was in Patiala. So that is the reason people think because my uh, Instagram handle is filled with all the stories of Patiala. uh, So uh, that was my first posting, and uh, it was an amazing experience. The 2 years full of, I must say, all the good work I could imagine that I could do for a particular district, and mm, uh, and yes, of course, we usually get independent posting as our first posting, which is a posting of a divisional head. So you are okay. postal department's head of a particular district. So I was the postal department's head for two districts, Patiala Mm, as well as Fatehgarh Sahib. So okay. I was handling two districts at the same time. Mm, So it was a job which was full of all the responsibilities, and I must say it's like the day you join it, on that particular day, I have to go in front of the chief information commissioner, and through an online VC, I have to mm, give a reply for some RTI for which like I didn't sign it, I didn't give any reply, but I was the one who was giving uh, justification for that. That's how the uh, system goes on. So on that day, I was like, I didn't do anything. Why I have to go? But something like that was going in my head. But uh, uh, being an officer, you have to be there. You have to do your duty. So uh, quickly, I read all the case study, everything, and then uh, I think at 11 o'clock, it it was the hearing was there in front of the chief commissioner, and uh, I was there with all the facts and figures. So the day I joined, I just like kind of bummed in the system कि like पहुंचते ही आपको बुलावा आ गया कमिश्नर का कि आप uh, जवाब दो इस पे ये आपने ऐसा क्यों किया है. It was something like that's the situation, and because I just joined, it was going in my head why I have to give any answer. I didn't do anything. uh, I was thinking like a kid, I didn't do anything. Why I have to give a reply? But uh, then slowly, I tried to get this thing कि you basically you're a holder of a particular post, uh, and for uh, that particular post
even a court's order comes, even someone comes, you have to go and report it because you are representing that particular designation, basically. Ma'am, before coming to this profession, you did engineering. No, no, no. I am masters in geography from अच्छा JNU, Delhi. नहीं वो मैं इसीलिए पूछा क्योंकि हम जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया ना तो हमारी आदत होती है पूरे सेमिस्टर बंक करके फिर भी एक रात में कंप्लीट करने की। तो हम जब बता रहे थे ना फर्स्ट डे तो तभी मुझे याद आया कि वो टैलेंट आ जाता है। तो मैम वेयर वाज यू बोर्न एंड ब्रॉट अप? I'm like born in Ajmer, Rajasthan, and brought up entirely in like Jaipur. मेरा पूरा college education वो भी जयपुर से ही है। उसके बाद में for masters I came to Delhi and I did my masters and after masters I started preparing for UPSC. Okay, okay. So still you are connected with your school friends or college friends? School, college, like one or two friends only. And yes, with some of my JNU mates, I'm still connected, I'm still in touch. And I think at every phase of your life, you make new friends. And I have been so lucky that not only in my school, college, till now, I am keep on like making good friends. तो कभी So recent, दोस्तों से yeah. वो कॉल नहीं आता है कि अरे वो देखा चेक बुक अटक गया है, कुछ कर सकता है कि नहीं? नहीं नहीं I get all the calls from like everywhere कि हाँ यार हमारा ये वाला चीज है प्लीज ये करा दो हाँ हाँ। पेरेंट्स का ये है प्लीज वो करा दो so I get all those calls but it's okay like we are at the service of the public so it's okay. जितना लाइक यू नो इट्स द स्टार्टिंग ऑफ द कन्वर्सेशन, जितना ऑब्वियसली इसके पहले लाइक वी हैड अ कॉन्वो, बट जितना मुझे आपके साथ बात करके लगा ना कि यू आर वेरी चिल आउट एंड यू लव टू मिक्स विद पीपल, है ना, जितना मुझे पर्सनली लगे तो इट समवट हेल्प्स यू ना इन योर प्रोफेशन। It helps a lot because earlier in Patiala, I used to have a staff of around 1,000 people. So you need to have a connect with them. And I was kind of outsider for them, not speaking हाँ their language. है ना? So I started learning Punjabi. I started reading. I started speaking या Punjabi. हाँ And we all started celebrating festivals together. So that is how you make a connect with your own people, and there is a need because they are your own staff. If हाँ and you should take care of them. If you as a head, you are like head of the family, right? So you're like head of the department. So just like that, you should take care of your staff. अच्छा। तो अभी जैसे मैम बता रहे थे ना कि यू आर द हेड ऑफ द फैमिली और यू नीड टू मैनेज सो मेनी पीपल, सो फॉर द अपकमिंग ब्यूरोक्रेट उनके तरफ से ये सवाल मैं आपको करूंगा कि आपके लिए वो आइस ब्रेकिंग सेशन क्या रहता है, क्योंकि जो आपके सबॉर्डिनेट होता है ना उनके मन में ये रहता है अरे मैडम है, मैडम को बोलूं क्या इफ शी डोंट लाइक इट, क्योंकि पीपल थिंक इट लाइक दिस वे ना। तो व्हाट्स योर आइस ब्रेकिंग मोमेंट सबके साथ कि उनको भी लगे अरे मैडम तो अपनी ही जैसे है, तो वो क्या रहता है आपके लिए? मुझे लगता है मैं जिस तरह से ऐसे हंस देती हूँ ना, that's the ice breaking thing. And I always used to start the conversation with Sat Sri Akal. And I used to ask them ki how they are doing, how their family is, if they have any trouble or anything, any request they want to make. And I ensured it like uh, the way you say na, the doors are open for the public as well as for the staff. So they can come and have a talk. It's not something like some ceiling is there or something is there कि you just can't approach your own officer. So I tried that best. A lot of your friends have joined. They are saying कि we are our besties, ये वो लिख रहे हैं सब लोग। Yes. उन सबसे मैं इस लाइफ के बारे में बात करूंगी. Definitely. But I'm so thankful to them that they all have joined this and they are cheering up continuously. Exactly. So, due to this digitalization, है ना, एक जमाना था कि सारे प्यार कहानी चिट्ठियों में बनते थे, है ना, उसके बाद सीधा व्हाट्सएप में आ गए, तो things are also changing up very soon and everything is taking up enough speed, huh? So, what do you think are the plans for postal service in upcoming years or how things are going to be planned? क्योंकि कुछ सरकारी काम तो obviously रहेंगे, but
मोस्ट ऑफ द मास थिंग जो काम चलती है वो शायद कहीं ना कहीं कम हो रहा है ना. सो व्हाट्स द प्लान ऑन दैट? I think I get this question a lot of time. हाँ. So basically, everybody thinks कि अरे we are not sending any letters. So what is the work with the postal department? But हाँ. but है ना? So I get this question a lot. हाँ. So basically, the e-commerce industry is booming. We all know that. We all make online orders. So those online orders, they get delivered through India Post in most of the tier 2, tier 3, and all the like tier 5, 6 places in Ladakh, in Northeast, and in Andaman Nicobar, and in Oh. Lakshadweep. So who delivers there? It's the India Post who's delivering it them. And I had a very first-hand experience during my Bharat Darshan. I went to Lakshadweep, and there we saw the postal system, how it works. So through ferries, they transport the parcels and all. And Wow. the Lakshadweep people were very happy because now they can order from Amazon, because हाँ. who will set up a retail shop there na, in Lakshadweep, for because there are so many islands. But because postal service is working there, so they were so happy. They can order from Amazon, they can order from Flipkart, because they know that India Post will deliver at their doorstep. So हाँ. that parcel business plus the financial inclusion, about which uh, there is just too much talking about it. Keep so at the doorstep, delivering the financial services, opening the account of a person, giving them cash at their doorstep. All these services are provided by the postman, and especially in the rural areas, this is such a need. During the COVID time, when a person could not go out, and there were many people who had pension in their account, but they just cannot go outside and get it encashed. So at that point of time, there's a service called Aadhaar enabled payment system, through which you just need to give your Aadhaar number and your mobile number, and you will receive an OTP, and you need to give your biometric. Just with these three things, you can get from any of your bank account, you can get up to 10,000 rupees cash. So it is अच्छा. such a good service which was provided. matlab, it is still going on. And in the rural areas, it's very beneficial because they can't go to the bank every time they want to have the cash in hand. So if there's somebody wants to have their scholarship or pension, there are so many benefits, government's benefits which comes in person's account. तो ऐसे टाइम पे और ऐसी चीजों में बहुत जरूरी है कि जो एक गवर्नमेंट का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी रीच जो है वो थ्रू आउट द कंट्री है. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कर रहा है. हाँ, बेसिकली आपने जैसे बताया ना वो सुन के मुझे ये लगा, बीइंग अ पोस्टल सर्विस ऑफिसर, जिनका पोस्टिंग जिस स्टेट में होगा ना उस हिसाब से उनकी काम करने का तरीका भी टोटल अलग हो जाएगा ना फिर. Right. But services and products, they usually remain same throughout the country. मतलब, but अच्छा. ठीक है, but हाँ तरीका obviously, because you have to see the local public, what are their priorities, and accordingly you have to accommodate them. Yeah. Somebody just kept a question, I don't know is it right or not, मैं पूछ रहा हूँ कि how many post office are under you? So when I was posted in Patiala, at that point of time, I had around like 221. There were rural post offices were there under me, and some 53 were urban post offices. My goodness, 221, 221. Yeah, yeah, yeah. Oh my goodness. Like I like hats off to you, ma'am. Like how you all handle so many post office. Like at first I thought it's 21, then you said 221. Like really, uh, No, wonderful. I think it has been the amazing team which I had in Patiala. I always give credit to my team. Because of them, I could do it. मैम आजकल ना कभी कभार ऐसे कुछ मतलब मोबाइल आने से ना लोग झूठ बहुत बोलते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ. मैं कुछ दिन पहले एक चीज ऑर्डर किया था. इट वाज नॉट फ्रॉम इंडियन पोस्ट, एक ऑनलाइन शॉप से Hmm. ऑर्डर किया था. और उस बंदे को आना नहीं था. उसने बोला अरे नहीं डिलीवरी नहीं हो रहा, ये हो रहा है, वो उधर से पोस्ट सर्विस वाले नहीं कर रहे. ठीक. कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने मान लो कुछ इमरजेंसी या कहीं से ऑर्डर किया, उसने बोले कि अरे नहीं मैडम वो तो आ ही नहीं रहा, इंडियन पोस्ट वाले छोड़ ही नहीं रहे. इंडियन वाले कह रहे तुम्हें पता भी है तो किससे पूछ रहे. ऐसा होता है कभी कभार.
नहीं, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ, बट आई वुड लाइक टू टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट. मतलब even though I'm not in police or anything, but I did something very filmy in real life. Yeah. So basically, there was a particular post office for which I was receiving complaint continuously कि whenever you go there, they just deny it कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं होता है, आप बड़े डाकखाने जाइए, यहाँ नहीं होता है ये. Hmm, hmm, तो मतलब through various channels we tried to amend this thing, but it could not happen. And every time that lady used to tell me कि नहीं नहीं मैम, मैंने तो कोई denial of service नहीं किया है. So then I was like, okay, let me just check it. So one day, I think those were like summers का time था, तो जैसे लड़कियां scarf लगा लेती ना, हाँ तो मैंने वैसे scarf लगा लिया, and I went myself as a customer हाँ to हाँ. check. अच्छा. Let's see, is it a reality or not? तो हाँ मैं गई वहां पे, मैंने ऐसे झूठी मूठी चिट्ठियां बनाकर मैं लेके हाँ गई. मैं कहा प्लीज मैडम ये बुक कर दीजिए, ये अर्जेंट है बहुत. नहीं नहीं, ये यहाँ बुकिंग नहीं होती है, आप बड़े डाकखाने जाइए. मैं कहा ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. हाँ हाँ. देन आई वेंट इनसाइड द पोस्ट ऑफिस, आई रिमूव्ड माय मास्क एंड लाइक जो मैंने स्कार्फ लगा रखा था एवरीथिंग. देन शी वाज लाइक नहीं नहीं मैम, सॉरी सॉरी सॉरी. आई वाज लाइक कि आप मतलब कितना कस्टमर को परेशान करते हो एंड ऑल. बट हाँ. देन आई इंटेरोगेटेड मोर, तो देन आई रियलाइज कि बेसिकली शी वाज नॉट दैट मच टेक्निकली लिटरेट कि हाउ टू बुक दीज थिंग्स इन द सिस्टम. Hmm. दैट इज द रीजन शी यूज्ड टू डिनाई इट. So then I got her trained, and obviously reprimand तो जाएगा ही जाएगा. Plus it sent a message across all the post offices कि मैम कहीं भी जाकर खुद कस्टमर बन के चेकिंग कर सकती है. So please सोचो ये कस्टमर को वीडियो वो डिनाई. देख रही है अभी. No, but that lady really improved her performance. हाँ. It's not something which like backfired या उन्होंने काम करना छोड़ दिया ऐसा कुछ. She really improved her performance. And Hmm. उनसे उनका ये चीज देखकर मुझे ये आइडिया आया कि बहुत कई बार ना स्टाफ को पता नहीं होता है कि ये काम कैसे करना है. दैट इज द रीजन दे डिनाई इट. सो व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग इन पटियाला, वी यूज्ड टू मेक 2-3 minutes का वीडियो tutorial kind अच्छा. of, and then we used to circulate them across the WhatsApp groups, Hmm. so that it will become very handy for the staff ना कि कभी कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो every time, अब रात के 8 बजे है, कोई और चीज है, या सुबह का कोई टाइम है जिसमें they cannot directly contact the system manager who trains them. So these small little videos, they became very handy for them. So and we used to make them in local language, ओके. स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और फिर लोकल लैंग्वेज में उस पे वॉइस ओवर करके, तो फिर वी यूज्ड टू सर्कुलेट. मैं अभी कस्टमर सर्विस की बात कर रहा था ना, तो मुझे एक सवाल आया कि आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट व्हेन यू वर शेयरिंग इट कि एक टाइम था व्हेन यू यूज्ड टू गो इन अ पोस्ट ऑफिस. ओके. आई थिंक आपके चाइल्डहुड में, हमारे चाइल्ड में पोस्ट ऑफिस के काम बहुत ज्यादा रहता था. आजकल तो इतना नहीं होता है. तो आपने भी बहुत बार गए होंगे इन योर चाइल्डहुड, कॉलेज डेज, स्कूल डेज, कुछ फॉर्म वॉर्म ये वो करने के लिए. नाउ व्हेन यू सिट इन दैट चेयर है ना, एंड व्हेन समबडी कम्स टू यू, मैम ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, अपने आप को कहीं ना कहीं देखते हो उन लोगों में, यार मैं भी उनके जगह थी एक टाइम पे, एंड आई एम सिटिंग. वो रियलाइजेशन आता है. मुझे पता नहीं क्यों, मतलब इन दीज थिंग्स आई एम वेरी इमोशनल दैट व्हेनेवर somebody who is very elderly or senior citizen type person comes, I always think कि अगर मेरे दादाजी या मेरी दादी, मेरे नाना, मेरी नानी कभी कहीं गए हो और उनको ऐसा प्रॉब्लम आए तो हाउ वुड दे फील. पेरेंट्स की एज के कोई होते हैं तो आई थिंक कि इफ माई पेरेंट्स आर देयर हाउ वुड दे फील. तो अकॉर्डिंग टू दैट आई इमीडिएटली रिएक्ट, कंसिडरिंग देम माई ओन फैमिली, कि इफ any of my family or friends, if they go there, and what they would have feel if they would have faced like denial of service or some bad or something like misbehavior if it's there. So so that's what goes inside me. I know this is very emotional thing, but that's how I think. या अभी ना मैं और एक चीज नोटिस किया आपसे बात करते करते कि ये चीज हमको सीखना चाहिए आपसे, या मैंने जितने भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट के साथ मैं करता हूँ ना, आप लोगों से ये चीज हमें सीखना चाहिए. लाइक वी यू शुड लर्न कि आप अभी बहुत हंसी मजाक से बात कर रहे हो, यू नो, यू आर इन दैट मूड, यू आर सेइंग दिस, बट मंडे मॉर्निंग यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन. इतने सारे प्रेशर, ये है ना. तो फिर वो स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे करते हो अपने आप को? वो कभी जैसे अभी बैठे हो, प्रेशर नहीं आता दिमाग में, हाउ यू हैंडल दैट थिंग?
that balance? Well, that balance hasn't come in one day. It has been a process. So हाँ, now it has been 4 years in the service. So हाँ, I also have learned because earlier I was like कि मैं घर पे फाइल्स लेके चली जाती थी कि नहीं मुझे काम खत्म करना है. So you are actually bringing that pressure to your हाँ, home also in your personal हाँ, life also. So very gradually I realized कि वो जो फाइल्स जो आप घर लेकर आए थे वो फाइल्स ऐसी कैसी रखी रह गई क्योंकि आप हम्म, ऑलरेडी इतना मेंटली एग्जॉस्टेड थे. हाँ, So it's better you keep a particular time for your work, and that time should be quality time in which you are doing yeah, your job. है ना? हाँ, And after that, you basically have time for your personal life, which is very, very important. So I have learned it in a process and I have learned it in a little hard way. So guys who all are listening to me and who will be watching it later on, it's a personal advice to everybody. Try to keep personal, professional little separate and always, always have that me time. I know people say that कि ये बहुत millennials का word है, हाँ, me time हाँ, and all, but it's very important. Maybe just have half an hour, but always, always have a time for yourself where you can think, reflect, and you can हाँ, plan for yourself ki, what you actually want. Otherwise, you will be burnt out, basically. so So, true. if you don't want to be burnt out and you want to live your life, because we all are here to live our life happily, that's the most True. important thing. Yeah. बातों बातों में बहुत ज्यादा मोटिवेशनल चीज बता दी आपने. Like it was really, I was listening it very carefully. It was amazing way you said. So you said about your me time. So what is your me time? What do you do? So my me time usually varies. I try to keep it in the morning, हाँ, and it depends. Well, these days after coming to Delhi, my morning time, especially my Wednesday and my Sundays, they are spent with my runners group. We go for running, हाँ. and I'm very bad at it. I hardly run like 5-6K. Okay, my pace is Don't also worry, very I am low. more bad than you. So don't worry. but but the only intention of me is I should be very consistent in it. हाँ. And recently I also got COVID, so Oh, I'm also like so I ensured it कि I recover well, and after that only I start running. So हाँ. our group captain Reeti, she has also joined earlier. अच्छा. हाँ. So yeah, so they all are very, very supportive. This group is like an amazing group of people who are super duper supportive to each other, and everybody encourages to each other to just run. They just say you just run and don't हाँ. think about pace and everything. You just need to be consistent. So these days I'm just looking for the consistency. That's my target. I should be there on Wednesday and I should be there on Sunday. In between, हाँ. if I get time, I go for a run. Otherwise, Wednesdays and Sundays are my like fixed. They are like my running days. तो हम ये जो आपने बताया तो उसमें से मुझे लगा कि आप लोगों के प्रोफेशन में ना ट्रांसफर एक पार्ट है. जैसे यू सेड यू वेर इन पटियाला, अभी दिल्ली में हो. खुद को एडजस्ट करना भी सीखना होता है ना, कि जब मैं यहीं पे जा रहा हूँ कि मुझे लोग मिलके वो चीज भी सीखना होता है ना. Yes, absolutely. It's very necessary. And because Patiala was my first posting, and हाँ, I used to say it to my friends over there that Patiala was my like first love को जैसे आप नहीं भूल सकते वैसे आप अपनी first posting को हाँ, नहीं भूल सकते हो. So I had an amazing experience and an amazing tenure in Patiala. So after that coming to Delhi, it was a quite a jump. At the same time, हाँ, it was little emotional again for me because you when you build a circle around you, you tend to miss हाँ, them and you have a social circle. So in Delhi, I felt like I'm like all alone. What to do? so हाँ. so gradually, then you start checking on your friends like who are still in Delhi. Then again, you start meeting people. You gradually starts like adjusting again. So it's very essential to adjust because transfers are like a part and parcel of life. It's like your professional thing, so you have to manage with it. And it's Yeah. better you manage with a smile. I think that you have already mastered, huh? Trying to. Yeah. So, though I don't come from that UPSC background, तो मैं खुद सीख रहा हूँ अभी आप लोगों से बात करते करते कि जैसे मैम फिल्म मेकिंग में होता है ना, जैसे कोरियोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, डायरेक्टर, स्टंटमैन, क्योंकि हम नॉर्मल लोग सिर्फ एक हीरो हीरोइन को ही जानते हैं, बट इनके पीछे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. इफ आई टॉक अबाउट पोस्टल सर्विस, अगर आप मुझे पूछोगे तो आई नो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पोस्ट मास्टर, सम पीएल,
एंड कुछ लोग होते हैं, बट आई डोंट नो लाइक वो कितने सारे लोग मिलके ये चीज चलता है. ऑब्वियसली सब तो बताना मुश्किल पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी इफ यू कैन गिव मी ब्रीफ आइडिया. So I usually people start the hierarchy from the top. No, but I'll start from the bottom because I really feel that postman, they are the people, they are the face of the department. So there are like around more than 1.5 lakh post offices across the country. So so at least one postman to would be there at least. So around like 4 lakh ke approx people are there who deliver the mail every day. So Okay. I think they are the most important people who are doing it because just think of those people who are in Leh Ladakh. They deliver it there. There also in such harsh situation. And if you think about the hilly terrains and all, so they walk miles just to deliver the letter, the parcel, or anything else. So I think they are the like the rock solid bottom of the department. And above them, obviously, to whichever particular post office they report. So उस particular post office का जो head होता है, they are called the postmaster. And above the postmaster, then there are people who are called inspector or ASPs, who are like the administrative heads of the subdivisions. And then there is a district head who is called SSPO. So earlier I was also SSPO. And above that SSPO, there is director, then there is postmaster general, and then there is chief postmaster general. So this is the hierarchy in the field. And then we have a postal headquarter, which is in Delhi. So presently, I am posted in the postal headquarter. So here you have lots of divisions, and where basically it's a policy making unit, which is headed by a secretary who is assisted by a team of DDGs, and there is a director general, there is a members. So a lot of people, a lot of officers are there who assist in making policy and also help the secretary in taking the policy decisions. So these are the people basically who are behind the postal department and who make sure that the department runs day and night. थोड़ा बहुत वो आईपीएस जैसा ही है ना, वो एसएसपी आईजी सुन के मुझे लगा कि थोड़ा Yes, डेजिग्नेशन yes, है. yes, बिल्कुल. So, ma'am, in the 4 years of journey, this postal service, you have seen a lot of stories, lot of situations, है ना. जैसे अभी तो मैम आप जैसे बोला पॉलिसी मेकिंग में हो, तो इतना लोगों से शायद मिलना जुलना नहीं होता होगा, बट व्हेन यू वर इन पटियाला एंड तब तो बहुत सारे आम इंसान के साथ मिलते थे. So if I want to ask you, like in this 4 years, any remarkable thing happened with you? You know, like आज भी goosebumps देते हैं, ऐसे कोई कहानी? पता नहीं इससे बाकी लोगों को गूज बम्स आएंगे या नहीं, बट बेसिकली लाइक स्वच्छ भारत अभियान तो इज लाइक पूरे ऑल ओवर इंडिया का ही एफर्ट है ना. तो हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस में भी ट्राई किया था कि लेट्स डू सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट. एंड हम लोगों का एक पोस्टल कॉलोनी भी था, उसमें भी वी ट्राइड दिस थिंग, सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट, कि लाइक गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, वो वाला करना, फिर उससे कंपोस्टिंग करना. दैट्स व्हाट वी ट्राइड. ठीक है. तो वी डिड आवर बेस्ट, वी ट्राइड फॉर इट, एंड इट वाज नॉट एट ऑल इजी. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस पीपल टू टेल देम कि नहीं आपको अपने कचरे के साथ ये करना चाहिए. कि हर एक को बहुत इजी लगता है कि जस्ट लो एंड जस्ट डंप इट समवेयर बिकॉज नाउ इट्स नॉट इन माय हाउस. That's what people think. Usually, that's a very usual trend. But with lots of workshop, we ensure that in the post office as well as in the colony, there is a segregation of waste, and that wet waste becomes we tried for its composting. So we did it, and then suddenly there was an announcement by the Municipal Commission of Patiala for the 2nd October. They were celebrating Gandhi Jayanti and all. So then they were having this Swachhta Day and all. And then there was this announcement that Patiala Postal Division gets the first prize among the public office category for their Swachhta efforts. So everybody was so happy. दैट मैम मजे आ गए, हमें तो प्राइज मिल गया इस चीज के लिए. हमें तो लग रहा था मैं ऐसे ही कर रहे वाला काम. तो somehow I felt so happy कि like आप कई बार छोटी छोटी चीजें हर दिन करते हो तो someday it gets a recognition, and then somehow you set an example for other departments, for other offices
कि अरे वाह उनका ऑफिस केम फर्स्ट, so हाँ we can also give it a try. So it kind of gives me goosebumps till now. मैम, कभी समय मिलते हो अपने आप को देखते हो 10-15 साल पीछे, कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुंच गए, कहाँ आ गए, देखते हो? जब भी टाइम मिलता है मैं हाँ। जरूर कोशिश करती हूँ देखने की, बट मुझे लगता है कि somehow my smile has remained the same. Then also at that point of time, like when I was struggling, I was not getting through the UPSC. I got through the UPSC in my fourth attempt. I was like कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है UPSC. 4 साल बेरोजगारी देखा है फिर यस मैंने देखा है. आपने? ओके ओके। बट यू नो द डे इट हैपेंस देन एक होता है ना कि पुराना सब आप भूल जाते हो फिर. देन यू आर इन लाइक अनदर मोड. देन फिर आप सब भूल जाते हो जो भी सारे दर्द दुख तकलीफ होते हैं, एवरीथिंग लाइक चला जाता है आपका. बट आपका वो क्या रहता था, जैसे आपने बोला ना 4 साल मैंने कोशिश किया है कि यूपीएससी हम्म क्लियर करने के लिए, बट वो जब हर बार फेल कर रहे हो आप हैं, उसके बाद खुद हम्म. को मोटिवेट करने के लिए क्या करते थे आप? It's little filmy, but still I would say that. हाँ। So I have a friend. Her name is Surbhi. Earlier, she and I we both used to prepare together for UPSC. हम्म, So it's a very famous poem. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती. So she herself has written that poem in very beautiful paper and all. बहुत उसने beautified version उसका बना के मुझे दिया था कि you please keep it on your study table and whenever you feel के अब नहीं हाँ, हो रहा है मुझसे just read हाँ। it. तो I literally kept it on my study desk. अच्छा। एंड उसमें ये लाइन है कि नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, हर बार चढ़ती है 100 बार फिसलती है, फिर भी उसकी कोशिश जाया हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो somehow this poem got into my head. मोटिवेट। Yes. तो उस टाइम पे वो सब भी होता था ना, कि जैसे कि मान लो आप यूट्यूब देख रहे हो या कुछ देख रहे हो, वो लबासना ये सब भी आते थे ना, और मन में भी होता था यार एक दिन तो यहीं से भी जाएंगे। होता है बट to be very honest, I detached myself from social media. I deactivated all my accounts. I uninstalled WhatsApp and then I studied. That's how I studied. मोस्टली मोस्टली जितने भी मैंने ऑफिसर्स को पूछा ना, सब यही कहते हैं, मैंने आई डीएक्टिवेटेड फ्रॉम दिस थिंग। ओके, थैंक यू सो मच मैम, मैं और टाइम नहीं लूंगा। इट्स अ प्लेजर टू हैव टॉकिंग टू यू। आई होप यू आल्सो लाइक डूइंग द पॉडकास्ट विद मी। No, no, I really had a good time and I am so thankful to everybody who could join this. And I have one thing to tell that एक कॉमन मैसेज सारी ऑडियंस के लिए और फिर बाद में एक स्पेशल मैसेज वीम टेल्स के लिए आएगा. अरे बाप रे। अच्छा। हाँ। Okay, so the audience, the people who joined, I'm so thankful you could join this, and whosoever will be watching it later, I'm so thankful कि आपने शुरू से लेके अंत तक ये वीडियो देखा है. हाँ। और मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, प्लीज प्लीज उनको परस्यू करिए. उनके लिए डेली आप एक स्टेप भी चल सकते हैं, प्लीज चलिए, बहुत जरूरी है. हम लोग ये सोचते हैं कि हमें 100 स्टेप्स चलना है. मैंने भी कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं 5 या 6 के भी रन कर सकती हूँ. मैं 100 मीटर दौड़ के हाँ। मेरे को शिन पेन होने लग जाता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ। बट समहाउ अब थोड़ा उस स्टेज में आ गई हूँ कि ठीक है, एट अ वेरी लिटिल पेस बट आई रन. हाँ। तो इन द सेम वे आप लाइफ में जहां पे भी हैं, आप जिस गोल के जिस भी स्टेज पे हैं, हाँ। प्लीज डेली एक स्टेप चलिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरी कोशिश करिए, क्योंकि ये गोल आपका है. आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और उसके लिए मेहनत नहीं करेगा. और अब एक स्पेशल मैसेज आता है वीम टेल्स के लिए. ओह, बोलो। Okay, Veem, I just wish you all good luck, all the best wishes. आप ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को लाते रहिए, उनकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ सबके सामने लाइए, बिकॉज इट्स वेरी असेंशियल कि सब लोग समझे कि वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक यू. डेफिनेटली डेफिनेटली। यू नो मैम, मैं थोड़ा सा इसको एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि अभी आप बोले ना कि वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। अभी जैसे आई वाज कवरिंग मणिपुर, आई एम डूइंग दैट मणिपुर सीरीज, मैंने आपको पहले बोला कि सो आई डिड अ एपिसोड विद द एडीजीपी सर ऑफ दैट,
तो ही माइट बी 50 प्लस तो पक्के होंगे, ठीक है, एंड वो 26 साल से एक ही टी शर्ट पहनते हैं, दैट फिट, है ना। तो हम्म। यू नो दैट पर्सन, लाइक कुछ होता है तो लाइक मैंने शेयर किया, मैंने कहा सर देखो सर मैंने लिंक है ये, एवरी टाइम आई मैसेज हिम ही विल रिप्लाई, और ही विल रिप्लाई इन हमारे जैसे वो स्माइली वाइली मिल के। मैं सोचता था मतलब इतने एजेड होंगे, सीनियर होंगे वो, थैंक यू डॉट, नहीं वो स्माइली वाइली भेज के भेजते हैं, आई एम लाइक seriously this person we should learn from them, and like really, and I'm also thankful to you ma'am ki that amazing person, मेरा मजा आ गया मेरे को आज बात करके honestly. नहीं, मुझे खुद बहुत मजा आया आज आपसे बात करके, और आई एम सो थैंकफुल टू यू वीन बिकॉज यू जस्ट डीएम्ड मी एंड Yeah. आई एम लाइक इट्स गुड कि आई कुड सी दैट मैसेज एंड आई कुड रिप्लाई टू इट. So all the best to you and all the best to all the people who are watching it. Just go for your dream. Just do the work for your goal. Thank you. Thank you so much ma'am, bye bye, take care. Bye. Bye.